ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello all, my name is Anuradha Mishra. I secured All India Rank 3 in Indian Forest Service Examination 2022. Firstly, I would like to introduce about myself. I belong to Dhanbad, Jharkhand. I have done my schooling, class 10th and 12th from Dhanbad itself. After that, I did my graduation in Computer Science Engineering from BITS Pilani and I graduated in 2015. After that, I worked for 2 years in Samsung Research Institute, Noida as a software engineer. And after that, I started preparing for civil services and Indian Forest Service. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में. It is an all India service whose examination is conducted by UPSC. And इस एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सिविल्स की तरह होता है. 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर माई स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स वाज नॉट अ बैरियर फॉर मी बिकॉज आई वाज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स कट ऑफ फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन माई 4 अटेम्प्ट्स. एंड फॉर प्रीलिम्स आई basically relied on 4 pillars. So first was the coverage of static books. I read the static books like Lakshmikant for polity, Spectrum for modern history, and I covered all the NCERTs. And it really helped me in covering most of the questions, in attempting most of the questions in the actual examination. And my second pillar was solving previous year questions. मैंने अराउंड 25 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया था. एंड आई रियलाइज्ड कि एवरी टाइम इट गेव मी एन एडवांटेज ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस इन द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एंड आफ्टर दिस माय थर्ड पिलर वाज करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर फॉलो किया था. यूजुअली आई रेड इंडियन एक्सप्रेस एंड इसके अलावा मैंने एक मंथली मैगजीन फॉलो किया था. एंड इसके बाद फोर्थ पिलर इज मॉक टेस्ट्स बिकॉज मॉक टेस्ट्स हेल्प्ड मी अ लॉट इन टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल्सो मैक्सिमाइजिंग माई अटेम्प्ट्स because I remember when in 2018 I was not able to clear prelims. तो उसके बाद मैंने 2019 वाले अटेम्प्ट के लिए अराउंड 80 to 85 मॉक टेस्ट्स लगाए थे. नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजी फॉर मेंस. तो फॉरेस्ट सर्विस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस में. पहला होता है जनरल नॉलेज, दूसरा होता है जनरल इंग्लिश और बाकी 2 ऑप्शनल्स होते हैं. तो मेरे 2 ऑप्शनल्स थे फॉरेस्ट्री और एग्री इंजीनियरिंग. नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी फॉर ईच ऑफ द पेपर्स. तो जनरल इंग्लिश के लिए मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी था. मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था एंड ग्रामर में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था मुझे उससे. इसके अलावा ऐसे का जो पार्ट है उसके लिए मैंने 3-4 एसेस प्रैक्टिस कर लिए थे. यूजुअली ऐसे का वेटेज ज़्यादा होता है जनरल इंग्लिश में. ऐसे 100 मार्क्स का होता है पूरे इंग्लिश में, जो कि 300 मार्क्स का होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड ऐसे. और मैंने अच्छा टाइम लिया था ऐसे लिखने के लिए. अराउंड 1 hour और 1 hour 20 minute लिया था मैंने ऐसे लिखने के लिए. इसके बाद जनरल नॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी. तो जनरल नॉलेज का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होता है सिविल्स के जीएस के साथ. तो मैंने प्रिपेयर वहीं से किया था जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी या मॉडर्न हिस्ट्री.
तो वो मेरे जीएस के नोट से ही हो गया था। इसके अलावा फॉरेस्ट में जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसमें साइंस एंड टेक का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो साइंस एंड टेक के लिए मैंने अलग से मेंस 365 किया था पिछले 2 साल का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कुछ नोट्स भी बनाया था कि कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। सो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माय अप्रोच फॉर फॉरेस्ट्री पेपर। So firstly, I focused a lot on learning the technical definitions in forestry. For example, silviculture है, तो we should know the terminologies which should be there in the definition of silviculture, like establishment, regeneration, development, care. And similarly, there were questions in examination like improvement, felling है, thinning है, nursery है, even wood का question आया था। So I memorized all the technical definitions, which was very useful in writing the introduction there. So I think I got an advantage there. And after that, secondly, I focused a lot on diagrams, and it was my effort to put at least one diagram in every question. After that, I also focused on writing case studies. जैसे कि आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, सो देयर वर स्पेसिफिक केस स्टडीज दैट आई रोट, जैसे कि थ्रेट टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम द पावर लाइन्स, और एलिफेंट्स एंड ट्रेन का कोलिजन, और इवन द थ्रेट टू आर्बोरियल एनिमल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन. And then I remember I also wrote a case study about Arabari Sal forest, which was the precursor for joint forest management. So these are some of the approaches I followed in forestry paper, and I think it helped me in maximizing my score there this time. Now since I prepared for around 4 months, but students who are giving it along with civil services, they might not be able to manage each and everything in forestry. So there are certain priority areas which should be focused. First is that in part 1A, actually entire part 1A is very important. It should not be neglected, because conceptual clarity in 1A is very important for the entire forestry paper. So I would say that 1A should be covered comprehensively. In 1B, focus should be given to agroforestry, social forestry, and even biotechnology in that. Now coming to part 2A, so in 2A there are 2-3 topics which should be focused. First is forest management, second is working plan, and third is remote sensing and GIS. Because every year there are 1 or 2 questions from these topics always. And now for part 2B, I would like to suggest students to focus more on topics like minor forest produce, wood technology, and forest legislations. Because this time I covered forest legislations very comprehensively. I even read the Bear Acts for 2-3 forest legislations given in the syllabus, and that helped me a lot, because directly I think one question was there directly from that topic, so it should be covered comprehensively. So now coming to agriculture engineering, this time I diversified my sources for agriculture engineering as well. Firstly, I followed agriculture engineering notes by Kajol Patel ma'am. Secondly, I followed video lectures by Gate for All Institute, and thirdly, I followed some books selectively like R. Suresh and Jagdishwar Sahai. But in the last 2 years, the pattern of examination, especially for agriculture engineering, is changing, and many unconventional questions are coming up in the paper, which are not doable by the basic books. So for dealing with such an unpredictability, I followed 2 strategies. First was the choice of questions, and I chose only those questions where I was very much comfortable.
For example, in a block, if I'm not knowing one question, but I'm very much confident about the other two, so I attempted those questions. And my second strategy was to capitalize on relatively easy questions which are from our sources. For example, I remember there was a question which asked for the difference between CI and SI engines. So, in book, around 12 points are given for that, and I almost wrote all those points with specific details like what temperature is required for both the engines, what pressure is there in both the engines. So, I think I capitalized on such type of questions in agriculture engineering. So now I would like to discuss my strategy for interview. Firstly, I did a comprehensive DAF analysis for my interview, and I prepared a lot of questions from my DAF. And in fact, in the actual UPSC interview also, a lot of questions directly came from my DAF only. Secondly, I took guidance from Mahesh Bhagwat sir, Shreyas Srivastav sir, and also Sankalp sessions by Uttam Kumar Sharma sir, and they were very helpful in preparing for the current topics from the forest perspective, like what issues are there and what is the way forward to solve them. Thirdly, I attended mock sessions at Forum IS. I did a one-to-one session with Ayush sir, and also I appeared for 2 mock interviews at Sankalp. So, this was my overall strategy for this examination. I hope students will find it useful, and all the best from my side.